What is this? This is an apple. But let's say a child is seeing this fruit for the first time. He or she doesn't know what is this. So parent says it's a fruit and it is apple. So what the child has seen, the color is red and this is what apple. कुछ दिन बाद parents ask the same child दूसरा एप्पल दिखा के जिसका कलर है ग्रीन. Interestingly, the child still could recognize this is an apple even though he or she didn't ever seen any green apple. तो उसको देख के समझ में आ गया जो नहीं ग्रीन है लेकिन ये एप्पल ही लग रहा है. Now here is the interesting question. Probably we don't think all these things. हम लोग सोचते नहीं है इतना इजीली सब कुछ हो जाता है, लेकिन जहां पे प्रॉब्लम ब्रेन में किसी का है तो ऐसा चाइल्ड को आप हैंडल करोगे तब तुमको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा जो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड आवर ब्रेन. द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट हाउ द इमेज ऑफ एप्पल and the sound from parents that it's an apple, how these two are connected. How did the brain connect these two information? How did the child understand that meaning? And can AI do the same thing also? So आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे how we human actually learns. How AI learning is similar to human learning. And where is the real difference between AI learning and human learning? Why AI learning can do much better things, but where human learning is far ahead than AI still. And trust me, if you understand today's video, suddenly it will be so easier for you to understand AI, the basics of AI. And it will be so very interesting for you for the next videos, upcoming videos. What we are learning and how AI is learning, these two are actually hand in hand almost, but there are certain differences. Devashish again from Devs Learning Hub, my YouTube channel Devs Learning Hub and my Facebook page to Devs Learning Hub. So आज सब लोग बोलते हैं AI, सब लोग artificial intelligence, अरे ये तो AI है. AI is not magic. AI is working like human brain. The basic philosophy is same. So experience plus memory plus common sense. These three, combination of these three is human intelligence, real intelligence. That is how human learns and that is how human exhibit their knowledge. And on the contrary, AI learns from data, algorithms and training. That is what artificial intelligence. Now see this interesting picture. There are total 7 steps in human learning. Data collection, signal conversion, processing in the brain, number 4 storage memory, number 5 pattern formation or learning, number 6 is recognition and prediction for future use, and number 7 is the action response, right? So the first step is data collection. So 5 sensory organ हम लोगों का बस है. तो कैसे ये data collection होता है? So I collect images through the light, reflection of light from the object, it comes to eye, right? Ear to hear sounds, tongue for the tasting part, nose to smell and skin to feel. These sensory organs, it is there just to collect data, raw data from the environment, from the world. But there is no meaning of the data as long as it is not processed in the brain. Probably it's a bit tricky. Let's go ahead. Now in the apple example, when the child is seeing this apple, at the same time parents is saying that this is apple. Child doesn't know it is apple. So one sensory organ, ear, is used to hear the information from the parents. So parents जो बोल रहे हैं ये एप्पल है, ये सुन रहे हैं कान से और देख रहे हैं आंख से जो ये रेड कलर का एक ऑब्जेक्ट है. अभी तक चाइल्ड को समझ में नहीं आया ये एप्पल है. बीच में कितना सारा प्रोसेसिंग हो रहा है ब्रेन में. नाउ यू सी. बट कैसे जाता है ये अलग अलग इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में भेजता है, दैट गोज थ्रू एन इलेक्ट्रिकल पल्स.
So that is pause, that called signal conversion. That is the second step. All these sensory organs input, all those input collected by sensory organs are passed to brain as electrical pulse. And the carrier is the neuron, biological neuron of human body. It passes all this information or carries all this information to brain. Now it is coming to the third step. That is what the processing in the brain. In our human brain, there are different segments in the brain which process different signals from different sensory organ. Let's say here you can see here the blue color, the symbol is eye. For anything related to visual part, that is actually processed in this area, that is called occipital lobe. OCCIPITAL, occipital lobe. All the visual information coming through signal, electrical pulse or signal, that is processed in this domain as an independent or discrete information. There is no link between the sound apple and the object information apple or image apple, right? As of now, only the image related signal that has come here. Whatever it is related to sound, all those kind of electrical signals, those are processed in this zone, in the pink color. The name is temporal lobe, TEMPORAL, temporal lobe. Touch, anything related to skin, that sensory information, that is processed in the zone that is called parietal lobe, Okay, so that is in green. So different, and similarly it is there for smell and taste also, right? That is limbic system. So जब ये चाइल्ड एप्पल को देखा है, जो vision related electrical signal that has processed in this, that will be processed in this occipital lobe. This lobe will collect the electrical signal, not only collect, then it will process. How it will process, कैसे process होता है? यहाँ पे जब ये सिग्नल आ गया है, ये सिग्नल आने का बाद ये डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन, एक है विजुअल पार्ट, एक है ऑडिबल पार्ट. तो विजुअल पार्ट में जो है एप्पल जो चाइल्ड ने देखा है, ये इसका कलर एंड इसका शेप, दोनों ही ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इधर से इट इंटरप्रेट्स द सिग्नल और द इमेज इटसेल्फ. Image is coming via signal, electrical signal. So these properties of the features in artificial intelligence, it is called features. These informations are extracted or processed in this part. Still there is no meaning, only extracting features, no meaning as a whole. And the sound information, it is extracted. It is an apple, that instruction from the parents. That is the language, understanding the language and the sound, and also filtering noise from the data. Filtering noise means ये जो मोबाइल में हम लोगों के पास आजकल होता है ना, हाई एंड मोबाइल में नॉइस फिल्टरिंग भी होता है, और आपका जो माइक्रोफोन भी होता है इसमें नॉइस फिल्टरिंग होता है, राइट? नॉइस फिल्टरिंग मतलब आजू बाजू से जो थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है, ये सब इसको नॉइस को फिल्टर करते हैं. मान लीजिए यू आर लिसनिंग टू योर टीचर, यू आर स्टडीइंग, and surrounding sounds are coming, and surrounding sounds are also coming. फैन का साउंड भी हो सकता है, घर में दूसरा कोई कुछ बात बोल रहा है, और इधर से कुछ गाड़ी जा रहा है, बाहर से गाड़ी जा रहा है, उसका साउंड आ रहा है. But your brain will not register all these things because there is a difference between hearing and listening. Hearing मतलब जो सुन रहा है, लेकिन listening मतलब जो सुन रहा है और दिमाग में मेमोरी में रजिस्टर्ड होता है. तो वो फिल्टरिंग, नॉइज फिल्टरिंग हो जाता है. जहां पे आपका फोकस नहीं है, दैट इज एक्चुअल नॉइज. सो आपको एप्पल बोल रहे हैं, पेरेंट्स चाइल्ड को एप्पल बोल रहे हैं, दैट इज फोकस, राइट? सो दैट चाइल्ड इज लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट एंड लिसनिंग टू दैट. सो ये नॉइज फिल्टरिंग होने के बाद ये जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एंड द साउंड, सो इट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन एंड दैट इज कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन. At the same time, ये जो इमेज देख रहे हैं एप्पल और ये जो साउंड आ रहा है इंस्ट्रक्शन एप्पल, these are happening at the same time. So whatever
sensory inputs are coming at the same time, those are actually overlapping information. एंड ये जो ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन है ये स्टोर हो जाता है। जो तीसरा चौथा जो प्रोसेस है देख लीजिए, ये प्रोसेस नहीं है, मेमोरी का पार्ट है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी वी हैव इन योर ह्यूमन ब्रेन। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू आपका कंप्यूटर में जो इनपुट बफर होता है, दैट इज नॉट फिजिकल मेमोरी एज सच। इट्स द सो इन इट लास्ट्स जस्ट फॉर मिली सेकेंड्स और टू अ फ्यू सेकेंड्स। इसमें जो होता है एप्पल का इमेज और साउंड जो आ रहा है एप्पल, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन एक साथ वहां पे ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से स्टोर है। इन बिटवीन ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन, अलग अलग डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन, जो डिस्क्रीट सेंसरी इनपुट जो है उसका एक्सट्रैक्शन हो गया, देन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, द वर्किंग मेमोरी, इट स्टार्ट्स वर्किंग। When it says that the overlapping information in the sensory memory is Apple image versus sound, then it links this processed data from occipital lobe and temporal lobe. जो एप्पल का इमेज और एप्पल जो साउंड आ रहा है, ये दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों को लिंक कर रहे हैं। लेट मी शो इट, जस्ट राइटिंग इट डाउन, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब इसको देख लीजिए कैसे होता है। तो जब आप चाइल्ड देख रहा है एप्पल को, जो हम लोग देख रहे हैं पहले, वो आंखों से जो देख रहा है रिलेटेड टू आई और सेंसरी ऑर्गन, ऑल दिस विजन रिलेटेड एंटिटी ए सिग्नल, दोज आर कैप्चर्ड बाय occipital lobe and transferred to occipital lobe after seeing, right, via neuron, biological neuron। यहां पे जाने के बाद वो occipital lobe जो है वहां पे vision related data signal is interpreted, the shape, color and other things, also visual information, that attributes of the features, ये सब extraction होता है। Sound जो कान से हम लोग सुन रहे हैं, ये जा रहा है वाया न्यूरॉन, न्यूरॉन इज पासिंग दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू टेम्पोरल लोब। यहां पे जाके वो सिग्नल का प्रोसेसिंग जो हो रहा है, साउंड एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रहा है, नॉइज फिल्टरिंग भी हो रहा है और लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हो रहा है, राइट। इसका बाद जो होता है, ये जो डेटा जब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ गया है, ये लोब में कैप्चर हुआ, उसका साथ जो भी सेंसरी इनपुट एक ही टाइम में हुआ है, वो ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन जो है ये स्टोर हो जाता है सेंसरी मेमोरी, जिसका स्पैन, टाइम स्पैन इज वेरी लिमिटेड, मिली सेकेंड्स टू फ्यू सेकेंड्स ओनली। विद इन दैट टाइम क्या हो जाता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये इधर जो प्रोसेसिंग हो गया है ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब में, शेप एंड कलर, विजन रिलेटेड पार्ट एंड साउंड एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑडिबल पार्ट, ये दोनों इंफॉर्मेशन जब ये देखा है जो सेंसरी मेमोरी में इमेज एंड साउंड एप्पल, दिस टू आर ओवरलैपिंग इंफॉर्मेशन, मतलब दिस टू आर रिलेटेड एट द सेम टाइम, ये दोनों फीचर एक्सट्रैक्शन दोनों लिंकिंग हो गया से शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज इक्विवेलेंट टू रैम इन कंप्यूटर, उसका भी एग्जिस्टेंस होता है फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स, राइट, अप टू फ्यू मिनट्स इवन, राइट, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है, बट दैट्स नॉट परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज जो होता है, लिंकिंग होने का बाद अभी इधर से कंसेप्ट, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल गया। एप्पल कलर इज रेड, शेप इज राउंड लाइक, नॉट राउंड, सो इट इज नॉट टाइप लाइक दैट राउंड लाइक। इसमें क्या होता है, जो एज इंफॉर्मेशन डेटा का हिसाब से आता है ब्रेन में, उसका तरीका से ये डेटा स्टोर हो जाता है, शेप का हिसाब से और कलर का हिसाब से। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्सपीरियंसिंग। ये जो आपने देख रहे हो, वो रेड एप्पल देखने का बाद भी चाइल्ड ग्रीन एप्पल को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ग्रीन एप्पल बोल रहे हैं, ग्रीन दैट इज ऑल्सो एप्पल। क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो रेड, कलर रेड और शेप राउंड लाइक हो रहा है, ये इट इज नॉट जस्ट understanding the pattern, it is understanding the pattern and also understanding the meaning, and that is why it is called experiencing, extracting information and linking and meaning, finding out the meaning or concept building, and that is why even though ये चाइल्ड इसको रेड एप्पल दिखा है, लेकिन वो ग्रीन एप्पल को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंसिंग, दैट इज द यूनिक थिंग इन ह्यूमन लर्निंग व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग। सो ब्रेन इज नॉट ओनली द स्टोरेज, इट इज ऑल्सो द मीनिंग मेकिंग मशीन।
it extract the meaning from the raw data. So what is experience? Experiencing means understanding the meaning from the raw data, understanding the concept from the raw data, not only understanding the pattern of the raw data. That is what called experiencing, and that is the unique part of human learning. So once that is already extracted and linking part it is done, and apple also this so this is color is red, shape is round like, and also it is the type is it is a fruit. All these informations are extracted and gathered, and then the meaning is there. Apple is a fruit whose color is red and shape is like this. This information then finally it is stored in long-term memory whose tenure is years and years, right? So that is long-term memory is also not a physical memory that is at a separate place like hard disk in computer. It is a distributed memory. Okay, so now again coming to this picture. So yes, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टोरेज इन मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक समझ में आ गया कैसे ह्यूमन लर्निंग होता है. एक्चुअली द स्टेप इज पैटर्न फॉर्मेशन. दिखा दिया जो पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद एक्सपीरियंसिंग नॉलेज, गैदरिंग द नॉलेज, बिल्डिंग द कंसेप्ट, देन इट इज स्टोर्ड इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, परमानेंट मेमोरी फाइनली, राइट. सो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल है. ये तो एप्पल बोला है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल होता है एक्सपीरियंसिंग. आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो. जो हम लोग कोई आग देखता है तो जब छोटा है चाइल्डहुड में हॉट ऑब्जेक्ट टच कर रहे हैं, एक बार पेन फीलिंग हो गया, दूसरा बार तो नहीं करता है. ये डिटेल्स में हम लोग देखेंगे. डार्क क्लाउड जो होता है, हम लोग को पता है डार्क क्लाउड हो रहा है तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है, मतलब ये जस्ट इफ यू गो आउटसाइड गो विद द अम्ब्रेला बिकॉज ऑफ लास्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, तो ये सब पैटर्न फॉर्मेशन जो दिस पैटर्न हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड क्विकली which is actually stored in the long term memory. उसका बाद जब इसको कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ पूछ रहा है, then it will compare in the stored memory, long term memory and find similar patterns. अगर similar patterns मिल जाता है तो predict the outcome for the new question or new experience and then इसका बाद decide the action. So तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये तो सेंसरी ऑर्गन उसका पास है नहीं, तो ये डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं? थिंक कैमरा एज एन आई ऑफ ह्यूमन. थिंक सेंसर कैन सेंस द वाइब्रेशंस, द लेवल ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वाइब्रेशन. Sensor can measure the temperature. So based on the sensor, right, the machine collect the information. So sensor can or camera, these you can consider as the sensory organ of human body. So it collects the data and where it is not required, it is only static data. ये हम लोग का एक्सेल शीट में डेटा दे देता है, तो पीडीएफ में डेटा देता है, वर्ड में डेटा देता है, बिग डेटा होता है जहां पे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उसमें स्टोर हो जाता है. ये सब डेटा लेके देन वंस द डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड डेटा इट इज ऑलरेडी देयर. तो ये आपका अप टू फोर्थ स्टेज तो हो गया. इसका बाद एआई का जो एल्गोरिथम होता है वो एल्गोरिथम दैट फाइंड्स द पैटर्न फ्रॉम द डेटा, गिवन डेटा, व्हाट ह्यूमन ब्रेन आल्सो डज. देन आफ्टर डूइंग द पैटर्न मैचिंग देन इट रिकॉग्नाइज प्रेडिक्ट. बट हियर इफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस training data doesn't have the green apple, only because artificial intelligence it needs huge volume of data. Let's go for the next picture, and before going there the bridging. So in human brain sensory organs equivalent to AI system, sensors or input data directly. Sensors, camera, all these are capturing information equivalent to sensors, right? Neurons in human body, biological neuron, that is equivalent to algorithm and neural networks. That you will understand much better if when I will explain deep learning, neural network, right? Memory, our human brain memory, that is equivalent to database or module storage. मेमोरी में हम लोगों का ये पैटर्न स्टोर होता है, ये पैटर्न जो स्टोर होता है एआई में, ये स्टोर होता है डेटाबेस में, नहीं तो मॉडल स्टोरेज, राइट? लर्निंग, that is equivalent to training. What we call in human phase, in human,
हम लोग जो सीखता है बोलता है लर्निंग, ये इसमें बोलता है क्या, ट्रेनिंग बोलता है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसका बाद आ जाता है रिकॉग्निशन, प्रेडिक्शन, इंटरफेस, इन्फेरेंस, वॉट एवर इट इज, सो डिसीजन एंड देन आउटपुट, दैट इज हाउ। सो what you understand apart from the data collection, but rest of the things more or less similar, AI learning and human learning. The difference is the experiencing from the data, what it is there in human, but in AI it is not there. Now let's move to the next picture. So next slide. So if you see, the child has seen only the red apple, but after understanding the concept, he has not shown so many pictures of so many objects of apple, just one time or maximum 2 times. Then human brain can recognize the apple, whatever the color changes also it happens. Then also the child is able to recognize the green apple. But if we need to train the AI model, there is not one apple, there are thousands of picture and different angles with different light condition, different kind of picture we need to give AI for learning. So AI cannot, even in human, if the child wants understand what is apple, if you cut the apple and give a piece of apple, then also ये child उसको recognize कर सकता है। इसको काट के टुकड़ा जो होता है, piece of apple, इसको भी चाइल्ड को देने से वो रिकॉग्नाइज कर लेगा जो ये एप्पल है। लेकिन एआई एप्पल नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, क्योंकि ये तो इसका पास इमेज है होल एप्पल, नॉट पीस ऑफ एप्पल। दैट इज व्हाट एक्सपीरियंसिंग इन ह्यूमन लर्निंग, राइट। तो एक जो चीज है एक्सपीरियंसिंग, ह्यूमन लर्निंग में एक्सपीरियंसिंग जो होता है एआई में है नहीं। ह्यूमन लर्निंग में डेटा बहुत लिमिटेड डेटा से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और एक्सपीरियंस लर्निंग से ये क्या होता है, ज्यादा डेटा नहीं लगता है लर्निंग के लिए, लेकिन एआई के लिए ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा डेटा, बहुत वैरायटी। सो क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ डेटा इज नीडेड टू ट्रेन एआई, राइट। वॉल्यूम ऑफ डेटा, नॉट ओनली वॉल्यूम, वैरायटी ऑफ डेटा, राइट। इफ अगर उसको रेड एप्पल ही 1000 पिक्चर दे देता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा जब उसको गोल्डन एप्पल और ग्रीन एप्पल देखेगा। तो वैरायटी टाइप ऑफ एप्पल, वैरायटी टाइप ऑफ इमेजेस उसको देना पड़ेगा इन हाई वॉल्यूम। दिस इज व्हाट जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है, जस्ट सिनॉप्सिस। बोथ ह्यूमन एंड एआई, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी जो है, जो ह्यूमन ये एंड एआई बोथ कलेक्ट इनपुट डेटा। वन कलेक्ट्स इनपुट डेटा, ह्यूमन कलेक्ट्स वाया सेंसरी ऑर्गन, एआई कलेक्ट्स इनपुट डेटा फ्रॉम सेंसर्स एंड अदर डिवाइसेस लाइक कैमरा or static data. Extract patterns, both human and AI extract patterns. Both human and AI store information in the memory. Both human and AI recognize or predict. That is the similarity. What is the dissimilarity or difference? Human experience concept and meaning. AI only derives statistical data pattern. Human learns from few examples. AI needs both quantity, quality and variety data. Human adapts naturally to the new situation based on common sense, but AI is limited to training data. Green apple भी ऐसे ही है, ठीक है। So that is the difference between human learning and AI learning. The most important statement: human learns the idea, AI learns the data. So AI is the greatest technology that is invented by human. If we really want to take the advantage of this phenomenal technology introduced by human only, then don't make any competition between human and AI. We should utilize where human is far ahead than AI and where AI is doing much better than human. So we need to combine these two, human plus AI. AI do the calculation processing of huge volume of data much faster than human. But understanding data concept, human is much better experiencing. Human is much better than AI. So now tell me in the comments, will AI also experience like human in future? And if you would like to understand AI
from the very basics in a simple way and interesting way, then subscribe my YouTube channel Devs Learning Hub and also follow my Facebook page Devs Learning Hub. Thank you very much.